Coverings Expo is one of its B2B platform wherein we have hardware, surfaces, and number of products. We have best of the best brands exhibiting their products over here at India Coverings Expo. And in terms of visitors, we are expecting a very good footfall of more than 15 to 20,000 B2B visitors, which are builders, interior designers, architects, the traders, manufacturers, the entire community is looking forward to for India Coverings Expo, and we are also looking forward to welcome them. We have the brands, their display, the products which they are launching here are n number of new designs, new products, new innovations, new creations. The brands have been working from last 6 months for these kind of to bring to launch their products at this platform, and I am looking forward to welcome them. Since how long this expo has been running? I mean, from when did it start? This expo started 5 years back. This is the 5th edition, and we are very proud that this expo, day by day, every year by year, the response we are getting from the visitors. We have visitors asking us and for visiting the expo. So this is the 5th edition, and every year we are almost doubling in terms of visitors, and we are getting more quality exhibitors and new products. Besides Mumbai, any other part of the country or? See, every expo has its charm. If we do an expo all the year round, maybe 2 times, 3 times, it loses its charm. This expo has its charms. It is held once in a year, and we will continue the same thing. We have plans in different concepts to go ahead with ICE verticals, different verticals. We'll be bringing in more verticals. We are only catering to 2 or 3 segments currently. So in the future, we'll be getting in more new verticals to this show. Thank you. Thank you. 18,000 से ऊपर कल रात तक का फिगर्स था. 18,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है. B2B, प्योर B2B, बिकॉज हम लोग जो इसको प्रमोट करते हैं ना, ये एग्जीबिशन को, ये प्योर B2B कम्युनिटी में प्रमोट करते हैं. बिल्डर्स है, हम लोग कंज्यूमर्स में कम प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्जिबिट करते हैं उसे मैन्युफैक्चरर्स है, इंपोर्टर्स है, ट्रेडर्स है. सो दे डोंट वांट जनरल कंज्यूमर टू फ्लो इन. So that is the way of our promoting, and that is a very good number. If you say 18,000 B2B registrations are very good numbers. Thank you. Thank you. स्पॉन्सर्स भी काफ़ी जुड़े हैं इस बार आपके साथ, तो अभी क्या करेंगे? हमें स्पॉन्सर्स के बहुत ये थे, चॉइसेस थे. चॉइस नहीं, हमें बहुत जन ने कहा, बट अभी जो हमारा स्पॉन्सर है ग्लिटोरियम, दे केटर टू 3 इंडस्ट्रीज. सरफेसिंग भी है उनके पास, टाइल्स भी है और हार्डवेयर भी है. सो जो भी विजिटर आते हैं उनको एक मिक्सचर चाहिए, हर एक चीज़. सो आर स्पॉन्सर, वी आर वेरी लकी टू हैव अ स्पॉन्सर लाइक ग्लिटोरियम, and even they are getting very good response, and since they cater to all the 3 industries, so we joined hands with them, and we invited them to sponsor this event. Hi everyone, I'm architect Kavita Talib from Navi Mumbai. I am really happy to be here at the ICE Expo. I've had a chance to look around, and there are some really nice new materials here for us to see. This kind of an expo is really useful for professionals and for architecture students. So I would like to wish the main sponsor Glitorium and all the sponsors all the best for a great event and interaction and networking with the architects. Yeah, thank you. Media. I'm an interior designer from Bombay. So as we all know where we are at ICE, and ICE is all about Indian Covering Expo, which is about interior products, and we all are looking forward to find new products with full excitement, and the whole year of products what we use, we get to see it first at ICE. So guys, let's get associated with ICE and find new products. All the best. Since we are celebrating the 5th year of ICE India Coverings Expo, because we are expecting the pan-India visitors which are going to visit the show here from 1st to 5th of November. We are celebrating the 5 years of industry from hardware, surface. We are very happy to receive a huge response from brands. We have all the architects and interior designers welcoming us, because ICE being a platform where you see
moreover, quantity, you see quality. You see the brands, you meet the brands and engage with them in such a way which joins your association for a lifetime. And it is not just one brand, it's all of them together which makes ICE. And I am very much looking forward that even next year would be the mega version that you all be seeing. And please do visit from 1st to 5th November on MMRDA grounds that is happening right here, right now. Thank you. Architect Girish Shatkar from GCDS. ICE Expo, it's as good as my own expo. There's a brilliant platform for all the B2B partners, all our traders and friends to come down on the same level and give us the latest products that are coming up in the market. Myself, Kulmeet Sadhu from Europapeak, and as usual, ICE अपना मुकाम रखता ही है. It has been doing consistent effort in delivering platform to all the trade dealers and trade people. And again, on this, I would like to wish them all the best and wish them all the success. There's a lot of hard work in team, Praveen, by Aarti and all. They put in a lot of hard work. So it is a platform which is look forward to, and I believe people from all India, all the dealers, distributors, all the trade people will get a lot of benefit coming here and getting to see new products, getting to new things. So all the best to ICE and all the best to the team. That's it. Thank you so much. मुंबई और पूरे इंडिया के आज इस आइस इंडिया एक्सपो में पार्टिसिपेंट हो रहे हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं इस इंडस्ट्री को लेकर विशेष करके ग्लिटोरियम जहाँ पर 2500 से ज़्यादा आर्किटेक्ट कनेक्टेड है उस ब्रांड के साथ में ग्लिटोरियम. मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ ग्लिटोरियम को कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्ट इस आइस इंडिया एक्सपो में लिया है और मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो हमारा सपना है विशेष करके नरेंद्र मोदी जी हमारे पंत प्रधान के मेक इन इंडिया इस विषय को लेकर वो बहुत गंभीर है और मैं चाहता हूँ ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंपोर्ट तो करती है लेकिन आने वाले समय में इंडिया इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोर्ट की भावना रखकर काम कर रही है. ये एक बहुत बड़ा एक चिन्ह आज के इस एक्सपो में दिख रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद. Hi, I'm Zareen Jamshedji Architects. I'm thrilled to see the array of collection for hardwares with the ICE. Very nicely done, bringing everyone together. A lot of new products to see. Thank you. पहले तो आइस का शुक्रिया करना चाहते हैं हम लोग कि आइस ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया ग्लिटोरियम को टाइटल स्पॉन्सर के हिसाब से पैन इंडिया में प्रेजेंस चालू हो जाएगा. फिर यहाँ से जो वी आर एक्सपेक्टिंग जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमारा मिशन और विजन जो है हमारा यहाँ पे कि जितने भी डीलर्स आते हैं मिनिमम हर सिटी में 1 या 2 डीलर का गैलरी बनना चाहिए ग्लिटोरियम का क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास इन हाउस है. यूरोपियन आइटम, हैंडल, हार्डवेयर, डिजिटल लॉक्स, एक्रेलिक शेड्स, लूअर्स, मतलब जो एक शोरूम को बेहतरीन बनाने के लिए चाहिए प्रोडक्ट्स वो सारे प्रोडक्ट्स अपने पास है यहाँ पे. तो वही एक्सपेक्टेशन है हमारा कि जितने भी डीलर्स आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पूरा कराइए वो शोरूम पे उनके और वो हिसाब से गैलरी में जाइए. तो वही अपना विजन है और मिशन है. वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ग्लिटोरियम टाइल्स. Basically Glittorium as a brand it's been in the market for last 22 years. Our focus when we came into the market was always to give products which are suitable for Indian market and to innovate and keep importing products from across the globe. So we started with hardware solutions, then we started importing architectural hardware. We became, in a very few years, we became a one-stop solution for all the hardware brands, for all the consumers, whether it is B2B or end customer or architects. We became the first choice for hardware solutions. And then we came into tiles division, and again we started with the imports of tiles and distributing across India. So now we are one of the major importers of European tiles from Europe across India. That is also one of the biggest portfolios. Apart from this, we have 8 showrooms which caters B2C. So when I say B2C, is we work very closely with all the architects across not only Bombay but in India. We are doing a lot of projects in Goa. We are doing other projects in Visakhapatnam, Vizag, and the only reason is that the brand has become so big now that the confidence in the brand
from across architects across the India have put up faith and confidence across our products, and they have accepted us very well. Whether it is tiles, whether it is hardware, or whether it is laminates, we will try in near future. We will try and get many more products which are suitable for our industry and for the Indian market. Thank you so much. इस 5 दिन का एक्सपो है ये, तो 5 दिन में हम लोग को लग रहा है कि काफ़ी सारे मोरलेस 5,000 4,000 अभी ये आइस एक्सपो 5 दिन का है, तो 5 दिन के लिए हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मिनिमम गाइड 3,000 डीलर्स आएंगे यहाँ पे, और वो डीलर्स को हम लोग को यूरोपियन आइटम्स देना है। यूरोप से जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, व्हाट वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम यूरोप, वी आर डिस्पोज ओवर ईयर, तो यहाँ पे आके पूरा यूरोपियन आइटम का शोकेस करना है। प्लस वी आर नाउ इनटू प्रोफाइल्स ऑल्सो, पार्टीशंस ऑल्सो, वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम टर्की, फिटिंग्स ऑल्सो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो वो पूरा टर्की सोल्यूशन देने वाले हैं। और डिजिटल लॉक्स के अंदर भी हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट किया है हम लोग ने अभी। डिजिटल लॉक्स ऑल्सो जो मार्केट में नहीं मिल रहा है वैसा फीचर्स वाला लॉक मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे। तो एक बार प्लीज़ आप लोग सब आइए यहाँ पे, देखिए आइस एग्जीबिशन में आते हो तो मेरा स्टोर्स है यहाँ पे, 8 स्टोर्स है मुंबई में, तो वहाँ पे भी आइए, एक बार विजिट करिए। सब नए आइटम्स जो है वो आपको देखने मिलेंगे। प्लस अभी सरफेस इंडस्ट्री में भी वी हैव एंटर्ड टू सरफेस इंडस्ट्री ऑल्सो। टूटेड एक्रेलिक शीट्स आ रहे हैं, नॉर्मल सॉलिड एक्रेलिक शीट्स आ रहे हैं, लूवर्स आ रहे हैं, तो वो सब आइटम भी आप कंपेयर करो क्वालिटी, आप कंपेयर करो प्राइसिंग, अब वो हिसाब से एक बार पूरा बास्केट मिलेगा यहाँ पे मीटर में। आप आओगे तो भी दिख जाएगा, पूरा बास्केट यहाँ पे मिलेगा अपने पास। About all the brands participating, so this ICE is a very good platform to participate and showcase all the products, whatever we are dealing in. Especially as my brother Dhawal mentioned that we are getting into more of a digital locks now that the time has come that everything is getting digitalized. So according to the innovation and the technology, we are also integrating our products with the technology together for the safety of homes, and we are integrating more, we are focusing more towards digital locks and the handles and the locks from European countries, which is giving a technological and innovative edge in the products. Also, as an exhibition, it is one of the very best exhibitions for the dealers across India. As a B2B platform, they can come and they can focusedly work for the product what they are looking for. They can have discussions with the particular brands, whatever type of the products they are looking for. So there is this is a very well focused B2B exhibition. And it is very good for all the brands participating. I wish all the best to everyone who is participating over here, and may this event be a grand success. थैंक यू। गैलरी में मुझे ऐसा लगता है आइस एक्सपो के अंदर आने के बाद आइस एक्सपो जो प्लेटफॉर्म हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है ग्लिटोरियम को, ये काफ़ी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर्स जो हमारे फैमिली हैं उनके लिए, और हमारे B2B डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी है, हम उनके लिए भी हमारे लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्लिटोरियम में। और ग्लिटोरियम के लिए काफ़ी एक अच्छा हम प्रोडक्ट रेंज लेकर के आए हैं बाज़ार में कि जो हम लोगों को दे सके बाज़ार में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोर देन 18 to 25,000 फुटफॉल जो है वो 5 दिनों में आना चाहिए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू।